Good evening. You're watching the news at 6 with me, Shan Russell, and these are the headlines we're tracking right now. Government isolated on land ordinance as opposition parties mount protests within the BJP too. Signals emerge of a dilemma on the new bill. All eyes on Railway Minister Suresh Prabhu as he readies to present his maiden rail budget tomorrow. Expectations of proposals around Make in India initiatives besides safety and security. Early into its first assembly session, Aam Aadmi Party government in Delhi moves on poll promises, slashes power tariffs and offers free water. Foreign ministers of Ukraine, Russia, France and Germany call for early implementation of the Minsk agreement to save a crumbling Ukraine ceasefire. Separatists step up attacks on border areas. And spouses of H-1B visa holders will be allowed to work in the US starting the end of May. The US to start providing permits to this effect for all professionally qualified Indians. A top story this evening, the Congress party staged a protest rally in the capital today against the government's land acquisition ordinance. Senior Congress leaders look to reach out to farmers, their traditional support base, as they slam the government on the move. A day after activist Anna Hazare, a Congress mega rally titled Zameen Vapsi Andolan at the same venue, Jantar Mantar in central Delhi. Over 1,000 farmers were present as senior Congress leaders lashed out at the government for siding with industrialists against them, betraying promises, vowing that the ordinance would not be allowed through parliament. किसान का पक्ष कांग्रेस पार्टी सदैव रखती आई है और आगे भी रखेगी और इस किसान विरोधी ऑर्डिनेंस को कभी पास नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे, जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, इसे सपोर्ट किया था, इसके पक्ष में वोट दी थी और 9 महीनों में अब ये बदल गए, इनका सही चेहरा सामने आया है। हम इसका कट्टर विरोध करेंगे। Ajay Makan, Jairam Ramesh, Deepinder Hooda, Raj Babbar and others, the party's leading lights were present as the Congress steps up pressure on the government, saying the bill to replace the UPA's Land Acquisition Act of 2013 is ill-conceived and anti-farmer. किसान का एक हक होता है और वो हक उसके जमीन का हक होता है। क्या उसके जमीन को छीनने के लिए किसी सरकार को अधिकार है? On Tuesday, the opposition had united against the government in both houses of parliament. BJP ally Shiv Sena too had slammed the ordinance. Other non-NDA parties have also rejected the new bill. हम सभी पार्टियों का सहयोग लेकर के इस बिल को वापस कराना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के भी सांसदों से अपील करूंगा कि जन विरोधी बिल है, इसको वापस कराए, नहीं तो जनता में कैसे मुंह दिखाएंगे आप। जब शिवसेना भी इस बिल के खिलाफ है तब तो इनको सोचना चाहिए, उस पर पुनः विचार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि इसको प्रतिष्ठा का सवाल भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनाना चाहिए। At a meeting of the BJP parliamentary party on Tuesday, Prime Minister Modi had made it clear that there was no going back on the law, but said the government was open to suggestions in the interest of farmers. देश के हित में हम इस कानून लाया, इस कानून के कारण से कोई कठिनाई हो रही, क्या कठिनाई है उसको समझ के अध्ययन करके समाधान निकलने के लिए कोशिश चल रही। Sources say differences have erupted within the party too on the ordinance. The degree to which the government actually bends will be keenly watched. Bureau Report, Rajya Sabha Television. As pressure mounts in the BJP on how to take forward the land acquisition ordinance, Prime Minister Modi today called his party MPs to bust myths on the ordinance spread by the opposition. The party has constituted an 8-member committee to gather views from all sections of the new bill. Modi also met MPs of allied parties on the issue. 3 of the BJP's main allies, the Shiv Sena, the Akali Dal and the Swabhimani Shetkari Sabha have already voiced concerns against the land ordinance. Sources say there's a dilemma within the party on its reformist outlook on one hand and a desire not to be seen as anti-poor. Outwardly though, the BJP has rejected the notion that the bill is anti-poor and anti-farmer. अब ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है 2000 एकड़ पर और ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद इससे जो पानी निकलता है ये
3 लाख एकड़ तक किसानों को फायदा होता है। ये जो छोटा सा 2000 एकड़ की जगह अगर डैम के लिए एक्वायर करनी है और वो अगर 80% अनुमति होगी तो ही अगर हम डैम बना सकते हैं, अगर ऐसी प्रोविजन रहेगी तो क्या इस देश के गरीब किसानों को पानी देने के लिए हम इरिगेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं? किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन अधिग्रहण करना ये उचित नहीं होगा। हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या हम नहीं चाहते किसानों का भी हमें साथ चाहिए, किसान भी हमारे साथ रहे? और किसानों को दुखी करना मुझे नहीं लगता हमारे सरकार के लिए उचित होगा। इसमें जो बदलाव किए हैं, खासतौर पर हमने वहाँ फ्यूजन की थी कंसेंट की किसानों की, वो निकाल दिया। दूसरा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का ये वहाँ निकाल दिया। और ज़मीन लेने के बाद 5 साल में कुछ नहीं किया तो ज़मीन वापस करना चाहिए, ये फ्यूजन हमने की थी, ये भी निकाल दिया। सबसे ज़्यादा रोजगार देती है, देश भर को पेट और देश भर को और दुनिया भर के लोगों को खाना खिलाती है। इसके साथ छेड़खानी करना, इतनी जमीन एक्वायर करके रखी हुई है, उसको क्यों नहीं लैंड बैंक बनाते? The present bill, which replaces the ordinance, takes away all the safeguards which were there in the previous bill. Previous bill had ensured a balance when it came to acquisition of land for public purpose, for developmental purposes, for infrastructure project. At the same time, if it was for public purpose, the social impact assessment had to be there. The Aam Aadmi Party government in Delhi today fulfilled its first election promise. It will provide 20,000 litres of free water to every household per month. The government also announced 50% cuts in power bills up to the usage of 400 units per month. 50% cut in electricity bills up to 400 units per month is something that the Aam Aadmi Party had promised in their manifesto. If the use of power and water exceeds the limits, bills have to be paid in full. The Aam Aadmi Party had made these two key election promises in Delhi. The decisions come into effect from the 1st of March. आज दिल्ली सरकार ने फिर से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के परिवारों को, दिल्ली के परिवारों को आधे दाम पर बिजली देने का फैसला किया है। और जो परिवार 400 यूनिट से कम बिजली खर्च कर रहे हैं उनको 1 मार्च से इसका फायदा मिलने लगेगा। 400 यूनिट से जो ऊपर खर्च करेंगे, यानी कि जो 401 यूनिट खर्च करेंगे, उनको पूरा बिल देना पड़ेगा। दिल्ली में 20,000 लीटर तक जो परिवार पानी इस्तेमाल करते हैं, 20,000 लीटर तक का जो पानी इस्तेमाल करने वाले परिवार हैं, उनके पानी और सीवर के चार्जेस सरकार माफ करने का ऐलान कर रही है। Now, the US announced a major immigration reform on Tuesday, allowing spouses of individuals with H-1B visas to apply for work permits. The new rules will take effect on the 26th of May. The reforms are met with relief in nations like India that sent a large number of workers while their spouses are unable to legally work. That's it from us. Goodbye.